everyone, welcome to my YouTube channel XAT Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha, and today I am up with another decision making video where we'll be discussing some business deal kind of things. Okay, so today's set will be based out of comprehension, where you have to study and analyze how you're making business deals and things like that. There will be 3 questions, one comprehension. You can refer to that in the description box PDF as well, or else just pause this and read this currently and get started with the questions. Okay, now before every decision making set, I always mention this, and I'll also mention this in this video, that decision making, when we are doing decision making, we should not do it with the perspective of what I think. Okay, the answer is already leaked out. These questions are from the previous year paper itself, and I don't want to divert from that. The reason being that is I have been very stringent about it, and I've even asked this to my professors at XLRI. They are like, whatever answers we have actually formulated, even if it looks wrong or something, that is, it is some kind of a real life instance or case study from which we have taken these questions, and this was what was happened. So that's why if you have to understand this or learn this, you have to know why is this right. So this should be your learning strategy. When you are reading this or when you are giving the answers to this question, try to understand why is it the answer. Okay, if you understand why is it the answer and why are the other 4 options not the answer, इस अप्रोच से पढ़ोगे तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी इन द फाइनल एग्जामिनेशन. बट अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के व्यू से पढ़ोगे तो हो सकता है कि कुछ फ्रूटफुल ना हो. So make sure you read it and you try to understand what makes it different, what makes it special. Alright, so let's get started. Now this one is Churna, a very peaceful village surrounded by thickly forested high hills and isolated from the rest of the world. So remember, some terms are very very important. यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है कि इस ये village थोड़ा isolated है. Agriculture is the main occupation, and moreover forest provides many things over here which is mentioned, and they produce in abundance. Okay, बहुत सारा produce करते हैं. For abundance में है तभी वो export के लिए ready है. ये हमेशा याद रखना, हम कभी भी किसी चीज को export सिर्फ तब करते हैं जब हमारे पास वो abundant हो. For all the material needs not produced locally, the Churma or Churna villagers depend on Tendua, which is a faraway town. So there's a relation now. Tendua is a town, Churna is a village. Once a month, Churna women would arduously trek with the surplus produce to Tendua, and in the Tendua market they'll convey the virtues of their produce through a beautiful dance and song routine, reputed by their hard bargaining skills. Like, please see, they are reputed by their hard bargaining skills. Okay, this is something for which they are known. तो आप किसी चीज के लिए पहचाने जाते हो तो वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Why am I stressing on it? I'll tell you in the coming questions. And they always manage to extract a premium barter from the traders more than fulfilling all their material needs. मतलब अभी इनका जो भी चल रहा है ना वो बहुत बढ़िया चल रहा है. Once a month वो जाते हैं अपने सामान लेकर, वहां जाके उसे इतने अच्छी तरह से प्रेजेंट करके बेचते हैं, और उनकी इतनी अच्छी हार्ड बार्गेनिंग स्किल्स है कि लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, वो पूरी तरह से उनको परचेज कर लेते हैं उनके सामान, and they are in a profitable end. Now we'll go through the questions and we'll decide what should be the best decision. And one more thing, always, if you have seen my shorts related to decision making tips, आपने उसमें देखा होगा, I have already mentioned that you have to put yourself in the shoes of the decision maker. तो आपको सबसे पहले किसी भी decision making question में ये determine करना है that whom are you making the decision for. All right, so let's read this question. Damdu, an ambitious trader of Tendua, wants to have exclusive access to all the surplus produce from the Churna. So which of the following offers to Churna village will best help Damdu? डिसीजन मेकर कौन है? दमदू. अचीव हर ऑब्जेक्टिव. सो दमदू को डिसाइड करना है. दमदू को एक्सक्लूसिवली सारा सामान चाहिए और वो चाहती है कि वो एक्सक्लूसिवली सारा सामान चूरना से ले और फिर तेंदुआ में जाके बेचे. तो शी वांट्स टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस लाइक दिस. एंड देखो,
Do not question her intentions. I repeat, this is one of the major mistakes people do. वो अपना एक परसेप्शन, एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये तो दमदू ठीक नहीं कर रही है, why is she planning to come and become the middleman. अरे ये तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपने परसेप्शंस और जजमेंट्स यहाँ पर ना लगाओ. Here your work only is stick to your work. You are working as a consultant for Damdu here, okay? आप दमदू के लिए डिसाइड करने वाले हो कि दमदू को ऐसे क्या करना चाहिए जिससे उसने जो सोचा है वो उसे अचीव कर सके. चाहे उसने जो भी सोचा वो एथिकली राइट हो या रॉन्ग हो, वो आपको कैसा लगता है आपसे किसी ने नहीं पूछा. आई एम सॉरी, दिस इज अ वेरी डीमोटिवेटिंग सेंटेंस, लेकिन आप क्या सोचते हो या क्या नहीं सोचते हो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता एज पर दिस क्वेश्चन. ओके, सो यू हैव टू वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर दमदू, एंड दमदू को आपको बेस्ट वे सॉर्ट करना है आउट ऑफ दिस 5, जिसमें आपको जिससे क्या होगा कि दमदू विल बी सक्सेसफुल इन व्हाट शी थॉट इन द फर्स्ट लाइन, दैट उसको एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए. तो ऐसा वो क्या करे जो उसको वो एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाए. अब वो सही है गलत है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज आई हैव सीन दिस विद पीपल, मैंने पर्सनली लेवल पे डिस्कस किया है, मैंने देखा है कि लोग इस चीज में तो आधा टाइम वेस्ट कर देते हैं. First option, Damdu should offer to set up a shop in Churna which will barter all the material requirements of village. Somewhat good, because at last at the end of the day चूरमा के लोग तेंदुआ क्यों जाते हैं? अपने ये सरप्लस सामान को बेचकर अपने मटेरियल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए. और अगर चूरमा में एक शॉप खोलकर दमदू ही ये चीज उन्हें दे दे तो शायद उन्हें इतना ट्रैवल कॉस्ट अकर करके और इतना मेहनत करके इतना दूर ना जाना पड़े. So that is a good idea which will in fact accomplish both the goals. Second option is Damdu should offer to provide colorful sarees. Come on, they are not kids that they will be fancied by sarees. Okay, so it's a wrong option. Damdu should offer to transport the villagers monthly material purchases from Tendua to Churma for free. और ऐसा करने पे क्या होगा? कुछ भी नहीं. All right, that's not something which they are asking for. Okay, this is not something which is compared to option A a good option. तो हम भी तक मेरे लिए option A is the correct answer, and until and unless I find a better option than A, I will continue. Damdu should offer to educate. Education about cash transaction has nothing to do with getting exclusive access, okay, over the surplus produce. Option E, Damdu should offer novel products unseen. Again, that will not fancy them because उनको सिर्फ अपनी material requirements पूरी करनी है and at the same time अपना सामान बेचना है. So if Damdu is doing all of it using a shop in Churma, that makes it the correct answer. So option A is the correct answer for question number 1. For question number 2, the head woman of Churma grants exclusive access to the surplus produce to Damdu. However, structured word. Damdu's euphoria dies down when she finds fewer takers for churma's produce in Tendua. This trend continues for the next few months. So, which of the following could be the most possible reason for Damdu finding fewer takers for churma's produce at Tendua? यानी अब तो क्या कर रही है? Damdu is successful in her needs, and अब क्या कर रही है? Damdu is actually, selling the things in her Tendua town. But वो देख रही है कि उसका यूफोरिया डाउन हो गया, उसका मार्केट डाउन हो गया. अब शी इज नॉट गेटिंग एज मच परचेजर्स फॉर द चूरमा's प्रोडक्ट एज शी एक्सपेक्टेड. या चूरमा वाले जब खुद आते थे तो वो जितनी बिक्री करके चले जाते थे, the one which Damdu is doing is way too less. So ऐसा क्यों हो रहा होगा? What is the most possible reason here out? So we'll skim through all the options and try to make a decision. Option A, Damdu cannot sing and dance simultaneously. What do you think? It's just about the singing and the dancing. We will try to pick out keywords here. Okay. Hard bargaining experience offered by Churma woman is missed by the traders of Tendua. Okay. The traders in Tendua market miss the aesthetics of the beautiful song and dance by Churma woman. Okay. Aesthetics of what? ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड डांस. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी है? सॉन्ग एंड डांस की. यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी है? सॉन्ग एंड डांस की. एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी है? हार्ड बार्गेनिंग स्किल्स की. ऑप्शन डी में किसकी इंपॉर्टेंस है? चूरमास प्रोड्यूसेस वन ऑफ द मेनी आइटम्स इन दमदूज इन्वेंटरी. अब दमदू के इन्वेंटरी में क्या माल ज्यादा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.
So this is something which is surely not my answer. The Churma woman offered the authenticity that Damdu could not match. The perfect reason for the decline in sales of Churma's product. Damdu वो authenticity दे ही नहीं सकती जो चूरमा वुमेन ऑफर करते थे, और उस ऑथेंटिसिटी में क्या आता है? सॉन्ग, डांस, बार्गेनिंग स्किल्स, सब कुछ आता है, ठीक है? तो when one word is covering all the essence together and making a straight comparison between churma and damdu woman, I mean churma woman and damdu, this is a complete sentence in its own sense, and ये आपका आंसर है, ठीक है? So you might be carried away by half answers in the top, but you know that you have to find out the full answer, and the full answer is option E. Moving to the last question for the day. A few months after granting exclusive access to Damdu, the village council of Churma meets to discuss the progress. After much debate and heated discussion, the village council decides to terminate the contract with Damdu, and the village council feels that if the contract continues, then kuch bahut bura hone wala hai. Now you have to find out in the descending order that सबसे बुरा क्या होगा, okay? जिसकी वजह से हमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहिए, और सबसे कम बुरा क्या होगा, वो दिस कैन बी द लास्ट रीजन फॉर terminating the contract. So सबसे बुरा क्या होगा? We will see कि किसका effect ज़्यादा होगा when you will actually be joining any of the premier B schools and studying the case studies. So मैंने देखा है, मुझे एक comment भी आया है अरशद का that he wants me to go through a case study. I'll surely try to do that. Okay. अभी आप लोग प्रिपरेशन में बिजी हो, so I was thinking not to do it, but maybe a month or so I will surely give you a try to how to solve the case studies using different approaches. कम से कम different approaches के बारे में भी बताऊंगी. That would be an interesting session. So in that you will be using several models. Okay, जैसे कि अभी तक आपने शायद सिर्फ SWOT analysis सुना होगा. Okay, but apart from that there are various things like the 9-box model, 3-box model, and Armstrong, and there are multiple things. Okay, so उन सब चीजों को यूज करके हम देखते हैं कि कौन सी चीज या कौन सी चीज करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है, या कौन सी चीज हमें ज्यादा dangerous लगती है. Like here चूरमा's produce will lose its association with चूरमा, मतलब अब उसकी स्पेशलिटी चूरमा के साथ नहीं रहेगी. जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि एक बैगन पिल्ली आम कहीं एक पर्टिकुलर जगह के बहुत फेमस होते हैं, उस तरह की चीजें. तो लूजिंग एसोसिएशन, प्रोडक्ट लूजिंग एसोसिएशन विद द प्लेस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, एंड रादर वी शुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं, दैट वी विल डिसाइड ओनली आफ्टर रीडिंग द लाइन्स. सो चूरमा पीपल विल बी ignorant to the new developments. Churma's dance and song losing identity, हार्ड बार्गेनिंग स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन, ये पर्सनल लेवल पे होने वाले डिसएडवांटेजेस है फॉर चूरमा पीपल. बट चूरमा पीपल बीन ignorant टू द न्यू डेवलपमेंट्स एंड लूजिंग प्रोडक्ट्स लूजिंग एसोसिएशन विद द प्लेस, ये दो चीजें ओवरऑल विलेज को अफेक्ट कर रही हैं. ओके, सो 1 and 2 is surely going to be my answer. That means B, C and E is eliminated. Now the decision is between, what do you think is the least important? The dance on the song, or do you think the people losing social interaction with the outer world? If you are not comfortable in this, you can even go ahead and maintain the order. जैसे आप देख सकते हो कि people will lose their hard bargaining skills. Do you think it is more important than people losing their social interactions with the outer world? Not really. People losing their social interaction is not their identity. Go back and check this. Reputed, मैंने अंडरलाइन किया था, इसीलिए किया था. Reputed for their hard bargaining skills. अगर आप किसी चीज के लिए reputed हो, for example I say person ABC is reputed for his let's say handwriting,
तो आप किसी चीज के लिए अपने हैंड राइटिंग के लिए सबके सामने रेपुटेड हो के अरे इससे सुंदर हैंड राइटिंग तो मैंने इस पूरे की पूरे कंट्री में किसी की नहीं देखी, तो ऑफ कोर्स उसे मेंटेन करना इज द सेकंड मोस्ट important thing you will do after these two things, right? So therefore we finalize our answer to be D, because D के according hard bargaining skills is the third reason जिसे lose करने की वजह से we will lose the identity and so on. So we will maintain that. Then we will maintain the song and dance identity also, जो कि मेरी speciality है. मेरी स्पेशलिटी को मेंटेन करने के बाद मेरे ऊपर जो पर्सनल इफेक्ट पड़ रहा है, लाइक सोशल इंटरेक्शन का कम होना, that is the last thing. Okay, so this is a very decisive question. Remember, A और D बहुत ही ज्यादा क्लोज है, हद से ज्यादा क्लोज है, but the only thing which will determine a fine line between them is what is special in you. This is the most important thing. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज स्पेशल इन यू, एंड अगर आपकी स्पेशलिटी किसी भी वे से हार्म हो रही है तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ओवर योर पर्सनल डिसएडवांटेजेस. लाइक सोशल इंटरेक्शन का मिस होना एक चूरमा के विलेजर के लिए एक पर्सनल डिसएडवांटेज है जिसे लास्ट में रखा जा सकता है. All right then, so this brings us to the end of the session today. We did 3 questions of one set from the previous year questions of XAT decision making, and if you want more such videos then मुझे जल्दी से comment section में बता दो, and I will be coming up with more such videos. Till then, you have to take care of yourself, keep studying, working hard. Exam is quite near, so अच्छे से पढ़ाई कर लो. All the best, and if you need any kind of help or guidance, feel free to drop a message anywhere. It can be on Telegram, Instagram, or the comment section of this YouTube channel. Everywhere I'm available. Give me 24 hours to reply. That's all. Okay then, thank you so much for watching this video. Like करना बिल्कुल ही मत भूलना, and if you are new to this channel then definitely subscribe to the channel as well, and share करना is a mandatory thing for everyone, new as well as old viewers. Alright then, see you in the next video. Bye bye. Thank you.